गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। कल हमने पैराबोला की जनरल इक्वेशन डिस्कस की थी। जनरल इक्वेशन मीन्स सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई बोथ, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स 0। ये इक्वेशन उम्मीद है अब तक आपको याद हो गई होगी, पूरी रट गई होगी। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ। ये इक्वेशन पैराबोला तब देती है जब डेल्टा की वैल्यू शून्य जीरो नहीं हो और एच स्क्वायर इक्वल्स ए बी हो जाए। कल जो एग्जाम्पल लिया था उसको वापस डिस्कस करते हैं। आज पैराबोला ट्रेस करेंगे। कल पैराबोला के डेफिनेशन से हमने उसकी इक्वेशन को डिराइव किया था। लेट्स कंटिन्यू। Focus was -1, -1. Directrix x plus y equals 2. That means x plus y minus 2 equals to 0. Equation of parabola x square equation of parabola x minus of -1 whole square plus y minus of -1 whole square equals x plus y minus 2 upon under root 2 whole square. This is by definition. कल हमने इसको पूरा सिंप्लीफाई किया था। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2 multiplied by this 2 and this is x plus y minus 2 whole square, so it is x square plus y square plus 4 plus 2xy minus 4y minus 4x a plus b plus c whole square. This is 2x square and minus x square, so it is x square minus 2xy plus y square. 4 then it is minus 8x minus 8y equal to 0. 2 into 2 4 and this 4 is cancelled out. कल की कैलकुलेशन में हो सकता है मैंने बोला था आई होप इट इज करेक्ट, बट यहाँ कांस्टेंट जो था वो -2 लिखा हुआ था। This is the correct equation, so I have done again. X square minus 2xy plus y square minus 8x minus 8y equals to 0. और कल के वीडियो में हमने वर्टेक्स कैलकुलेट किया था, that was 0, 0. वर्टेक्स पैराबोला के ऊपर लाई करता है, इसलिए इसको डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है, जो कांस्टेंट टर्म नहीं है। उसके बाद में हमने इसके एक्सिस का इक्वेशन कैलकुलेट किया था, that was x minus y equals to 0. लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर कैलकुलेट किया था, दिस वाज 4 अंडर रूट 2। पैराबोला के लिए मैंने आपको बता रखा है 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व: फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, नाभि लंब की लंबाई। यहां यह देखना है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमें दे रखा है, इससे हमने पैराबोला की इक्वेशन कैलकुलेट की है और इस पैराबोला की इक्वेशन को यूज करते हुए या इन डेफिनेशंस को यूज करते हुए हमने वर्टेक्स, एक्सिस और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर कैलकुलेट किया है। अब इसका रिवर्स पार्ट, ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना ये किस कर्व के इक्वेशन है, उसके बाद ये 5 पॉइंट जो है, फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इसका वर्टेक्स क्या होगा, एक्सिस क्या होगी और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर क्या होगा, ये कैलकुलेट करने के बाद इस पैराबोला को ट्रेस करना, इसका ग्राफ बनाना। आज ये काम करेंगे।
एज ए क्वेश्चन फॉर्म में लिख देता हूं मैं, ट्रेस द कर्व। गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन इज सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई बोथ। पढ़ रखा आपने, बार बार कहता हूं हम 2D की बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो इक्वेशन है या तो ये पेयर ऑफ लाइंस देगा या सर्कल या पैराबोला या फिर इलिप्स या फिर हाइपरबोला, इन 5 में से कोई एक 100%। हम देख चुके हैं कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसलिए यहां पर जो है हियर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 विद एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, देयरफॉर गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन है। h square equals ab means the second degree terms taken all together, this part will make a perfect square. That is the hint, key point. And you say this is x minus y whole square. It is due to this. So the given equation is the equation of parabola. Then how to find the 5 members of this? How to find focus, vertex, axis, directrix and length of lattice vector. The equation is x square minus 2xy plus y square minus 8x minus 8y equal to 0. I rewrite this, x minus y whole square equals 8 times x plus y equals to 0. I don't know it is minus 8 or plus 8. It was x square plus 2 times x square plus y square plus 2x. If 4, then it is minus 4x. It is plus 8x, yes. So here it is minus. This is the correct one. लिखा हुआ नहीं था इसलिए it is this. क्या होगा? Maybe. So now we analyze this equation. This is x minus y whole square equals minus 8 times of x plus y. V is the fundamental. We people know this equation. Y square equals to 4x. If I draw the diagram, everybody knows this diagram very well. Any general point of this parabola, suppose this is P, then coordinates x comma y, general coordinates. We draw the perpendicular, this side and this side. Then this is origin, this is x and here it is y. Now see, I rewrite this equation, y square equals to 4ax, that is y whole square equals to 4a times x. Look at this equation carefully. If this part, this y equals to 0, then it becomes this line. This is a tangent to the parabola at the vertex. Second, if I make it this part equals to 0,
मैं इसको वापस रेक्टिफाई कर रहा हूँ. Y equals to 0 means it is this one. So this is the axis. And x equals to 0 means it is this one. So this is a tangent at the vertex. Remember, y equals to 0, this is the tangent at the vertex, and this part means x equals to 0, here it is y equals to 0 and here it is x equals to 0. So x equals to 0 is y-axis, this is the tangent at the vertex, and y equals to 0, then this is the axis of this parabola. This is the axis. One thing more, these two lines are perpendicular. Yes. यहाँ ये ध्यान रखना है ये लाइन और ये लाइन ये दोनों परपेंडिकुलर है और इसका फॉर्मेट ये है, ये बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मेट दिखता है, आप देख सकते हो. अब आपको ये चेक करना है कि ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं. सो इफ आई राइट x minus y equals to 0 and x plus y equals to 0, then slope of this line is 1 and slope of this line is minus 1. So m1 m2 equals to minus 1. So these two lines are perpendicular. It will be this. Second thing, I can write this equation as capital Y whole square equals to minus 8 times of capital X. But before writing this one point is to be noted. Here this says the length of perpendicular on this line, and here it is the length of perpendicular on this particular line. So we try to convert this particular part as a length of perpendicular formula. So what is the length of perpendicular formula? Remember, it is ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. This is the length of perpendicular from the points P x1 comma y1 on the line ax plus by plus c equals to 0. Instead of x1 comma y1, if I consider xy, then the formula will be ax plus by plus c upon under root a square plus b square for general part of this. So we try to convert this part and this part both as this one. So how to convert? What is the coefficient of x? 1. Here it is 1. So a is 1, b is 1. So root a square plus b square will be root 2. So let us continue this one. Remember, this is the modification. You have to remember it. Now remember, this is the example. Unfortunately, we found this example that if two lines are perpendicular, but it is not necessary. If these two lines are not perpendicular, we have to make them perpendicular. We have to modify this one. Suppose, for example, I write the equation x square minus 2xy or plus 2xy plus y square minus 2x minus 1 equals to 0. Suppose it is this. This is x plus y whole square equals to 2x plus 1. Now, this equation looks like this. But here it is 2x plus 1 and here it is x plus y. These two lines are not perpendicular. So be careful. Here unfortunately this example becomes in such a way that these two lines are perpendicular, but here it is not. We will do this example in the next video. So how to make it perpendicular. So here the lines are perpendicular, of course it is correct. Now we write this expression as the length of perpendicular. So the constant was root 2. So write it here. X minus y upon root 2 minus 8 x plus y upon root 2. We balance the constants. Here it is root 2, here it is root 2. Both must be equal. Sign से कोई फर्क नहीं पड़ेगा because it is root a square plus b square. But it must be perpendicular lines. Now we check the calculation here. This is root 2, but here it is square.
So root 2 whole square is 2. So in the denominator we have 2 and here it is root 2. It means we will multiply it by 1 by root 2. So root 2 into root 2 is 2 and here it is 2. So now the equation is balanced. So we rewrite this. It is x minus y upon root 2 whole square equals minus 8 upon root 2 into x plus y upon root 2. This is x minus y upon root 2 whole square equals to minus 4. 8, 4 into 2, then this 2 and root 2 is cancelled out, so it becomes like this. This is the basic one. This implies capital Y square equals 4a into capital X, where what is capital X? X plus y upon root 2. What is capital Y? X minus y upon root 2. And what is 4a? 4a is minus 4 root 2. Now this equation is reduced as the standard one, that is capital Y square equals to 4x. आपको याद हो हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाला था 4 रूट 2 और यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है, इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट है वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देता है। क्योंकि लेंथ है इसलिए हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, उसको रूट साइन, उसको मॉडुलस साइन में लिखेंगे। इसलिए आपका जो आंसर था पहला वाला वो यहाँ वेरीफाई हो गया है। इसलिए मॉडिफिकेशन जरूरी है। यदि आप मॉडिफाई नहीं करोगे तो गलती से आप उसको 8 लिख बैठोगे। सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस वन। So capital X is this, capital Y is this, and whatever we have, therefore we can write the value of A becomes minus root 2. Now we come to the first part. One by one, we find vertex. Everything we will write with respect to y square equals to 4x and we calculate it. If it is this equation, then vertex is 0, 0. It means capital X is 0 and capital Y is 0. Because we are writing with respect to this. What is capital X? This. So capital X is 0, capital Y is 0. It means x plus y equals to 0, x minus y equals to 0. We simplify these two equations. We find that it is 0, y is 0. Therefore, vertex is 0, 0. कल भी हमने यही कैलकुलेट किया था। कल भी जो वर्टेक्स था वो 0, 0 ही कैलकुलेट किया था। सेकंड वी कैलकुलेट फोकस विथ रेस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस a, 0. Capital X is a, capital Y is 0. This is capital X means x plus y upon root 2 equals to a means minus root 2. You can see. Capital Y means x minus y upon root 2 equals to 0. X plus y equals to 2 minus 2 and x minus y equals to 0. सर वो नेगेटिव साइन की वजह से फोकस माइनस 1, 0 आएगा? नहीं बॉस, बिल्कुल ठीक लिखा है क्योंकि मैंने कंपैरिजन इससे किया। ऑलरेडी मेरे पास में एक वैल्यू मैंने नेगेटिव ले लिया था, इसलिए बैटरी ये है। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पुट अप किया है। बैटरी ये है कि आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही उसको कंपेयर करो, तो नेगेटिव पॉजिटिव का झंझट ही नहीं रहेगा और मिस्टेक भी नहीं होगी, ऑटोमेटिक इसका ओरिएंटेशन बनेगा। लेट अस सिंप्लीफाई दिस वन। x minus y equals to 0, so here x equals to y, x equals to y means it is 2y, 2y equals to minus 2, therefore y equals to minus 1, y equals to minus 1, x equals to y, so x is also minus 1, therefore focus is minus 1, minus 1. याद होना चाहिए कल फोकस यही था, minus 1, minus 1. पैराबोला केस में ये दो पॉइंट्स होते हैं जो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट में।
एक्सिस। इसके लिए एक्सिस एक्सिस होता है जिसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, उसके केस में then it is y means here it is this one, so I straight away write x minus y upon root 2 equals to 0 implies x minus y equals to 0। कल हमने एक्सिस कैलकुलेट किया था वो यही था। then we come to fourth part, that is directrix। directrix capital X equals to minus a। what is capital X? x plus y upon root 2 equals to minus root 2। so this implies x plus y equals to 2 और कल की डायरेक्ट्रिक्स भी यही थी। आंसर इज वेरीफाइड। then the fifth point, that is length of lattice rectum, नाभि लंब की लंबाई, that is 4 root 2। what is this? कल भी यही था, आज भी यही है, क्योंकि एग्जाम्पल वही है। इस तरह से हमने 5 पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं और इक्वेशन दे रखी हो तब इसके 5 पॉइंट्स हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ, फोकस और एक्सिस इन दोनों का देखते हैं, बिकॉज फोकस इज ऑलवेज लाइंग ऑन एक्सिस। एक्सिस इज x इक्वल्स टू y means line passing to the origin making equal angle with this। Here it is। focus is -1 comma -1 means in third quadrant। Here it is। this is the focus। vertex 0 comma 0 we have already calculated। this is the vertex। vertex is at the origin, focus is this side। parabola always opens towards the focus, इस तरफ खुलेगा ये, not like this। means directrix will be in the back and we know the equation of directrix, x plus y equals to 2, x plus y equals to 2, 1 2 2। so remember directrix is always perpendicular to this। डायग्राम बिल्कुल ठीक बन रहा है, इसलिए ये बिल्कुल सही आएगा, x plus y equals to 2। अब पैराबोला ऐसे बनेगा तो ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, ये कहां से कट होगा? हो सकता है ये ऐसे बन जाए, हो सकता है ये ऊपर से ऐसे बने। अब कैसे बनेगा? बेस्ट वे ये है कि डायग्राम यदि एक्यूरेट हो, उसके लिए मैं इक्वेशन दोबारा लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x 2xy plus y square plus 8x plus 8y equals to 0। Let us find the points of intersection with x-axis means y equals to 0। So if I write here y equals to 0, y0 means this out and this out। So we find x square plus 8x equals to 0। So x is 0 comma minus 8। So one point is 0 comma 0 and other point is minus 8 comma 0। 0 comma 0 हमें पहले से मालूम है क्योंकि वर्टेक्स 0 comma 0 है। minus 8 comma 0 it will be somewhere else, यहाँ कहीं होगा। सपोज मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ minus 8 comma 0 minus 8 comma 0 यहाँ कहीं इसको यहाँ मार्क कर। Similarly, if I put x equals to 0, this coming out and this come out, so we find as usual y equals to 0 comma minus 8, so point 0 0 and 0 comma minus 8, this point, and here it is this point। So now we draw the parabola। This is the required graph of parabola। Thank you very much। कल दूसरी इक्वेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।